ओके, तो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज अप्रैल 26 है और हमारा ये 7th सेशन है कोरोना वायरस की मीटिंग का। और आई थिंक बहुत अच्छा चला आ रहा है हमारा सेशन जो है। एंड दिस वीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, जैसे कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और आपने सुना होगा कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन होंगे आपके पास। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी प्रेस में कि कि आप इंजेक्ट कर सकते हैं लाइसोल को, और यूवी लाइट से क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और काफ़ी हम ये देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट में स्पेशली जो केसेस हैं और इवन ग्लोबली जो हैं वो प्लेटो कर रहे हैं, जो केसेस हैं कोरोना वायरस के। तो उसमें जब जो है इकॉनमी जो है वो हम ओपन करेंगे, तो ऐसे में क्या जो है हमें मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम सेफ रह सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन गो टू वर्क। और एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों से बात हुई है पाकिस्तान में, हमारी कुछ फैमिली है जहाँ पर हमें पता लगा कि कुछ लोग जो हैं वो जो व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ें पे टोटके जैसे होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसमें मुझे पता लगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज और जो गार्लिक है वो यूज़ करने की वजह से बीमार इवन हो गए। तो आई वुड से कि उस पर हम बात करेंगे कि उसके बारे में क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको आप पहले उसका सोर्स जो है उसको चेक करें और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें। और एक और चीज़ जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोगों को कोरोना वायरस, स्पेशली यंग जो पीपल हैं, ये डेवलपमेंट आ रही है कि उन लोगों को स्ट्रोक्स काफ़ी हो रहे हैं। इवन दो कि वो वैसे इल नहीं है, दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, बट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी डेंजरस है और आपको पैरालाइज कर सकती है। तो यंग लोग जो 30s में हैं या लेट 20s में हैं या 40s में हैं, उनके अंदर ये कुछ केसेस आ रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस की वजह से स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। और आई थिंक अब हम मंसूर भाई की तरफ चलते हैं। तो मूविंग ओवर टू यू। थैंक यू। All right. Thank you for this nice introduction and recapping, Kaiser, and thank you, Nida, for setting this up. And thank you for Sabina in advance for giving your inputs later in the show. And then तो उसको हम शुरू इस तरह करते हैं। जितनी भी चीजें खिजर ने बोली इनको हम डिस्कस करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने लास्ट मिनट एक गेस्ट से बात की है कि वो हमें आके थोड़ी अपडेट देती है। कुछ दो क्वेश्चंस जो हमें पहले पूछे गए थे, आई थिंक उसने बड़े अच्छे आर्टिकल लिखे हैं उस पे, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हर इन। एक तो था कि टेक आउट फूड सेफ है नहीं है या उनको किस तरह हैंडल किया जाए, और दूसरा आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि जो अगर इस टाइम पे क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो कुछ लोगों को क्वेश्चन था कि पेट को अडॉप्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि लोनली होते हो अगर जो आपने एक पेट रखा है तो उससे आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम होती है। तो वी वेलकम सारा अहमद, मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो हमें इस पे अपडेट देगी। गो हेड सारा। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो जब तक वो सारा सेट करती है उतनी देर तक जो खिज़र ने कुछ चीज़ें बोली हैं, एक तो वो जो यूवी लाइट और लाइसोल या ब्लीच के इंजेक्शंस, ये चीज़ें जो प्रेसिडेंट ने मेंशन की थी, समहाउ मेरा ख्याल कॉमन चीज़ है, इसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत सेहत के लिए बुरी हैं, जहरीली हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि कुछ पॉइजन कंट्रोल जो कॉल सेंटर्स हैं उनकी कॉल्स भी हाई हो गई हैं। कुछ लोग इंक्वायर कर रहे हैं लाइसोल के बारे में, और जो ब्लीच पॉइजनिंग है भी हाई हो गया है। तो इसलिए जो भी चीज़ बाहर सफाई करने के लिए है उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है किसी भी सूरत में। और दूसरा जो यूवी लाइट, हमें पता है कि वो बैक्टीरिया मारती है, वो अलग तरह की लाइट होती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है कि जो जिस्म के अंदर डाली जाए और इस वायरस को ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल ये एक गलत स्टेटमेंट और उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो अगली I'm not अपडेट है, sure. I just want to add. I mean, I think we all know, as that obviously, what the president says you can't take for face value, and obviously all these, the Lysol, all these things, they all have warnings on them that they can't be ingested, and unfortunately, I mean, common public didn't understand that, but I'm hoping everybody in this group is aware of that, and that is not a issue or concern. हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और पूरी दुनिया भर में हर जगह। तो आप थोड़ी सी और अपडेट देते हैं
कि इस वक्त करंट स्टेटस क्या है वायरस का। आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया में क्लोज टू 3 मिलियन केसेस हैं और अबाउट 200,000 डेथ हैं, और यूएस के अंदर तकरीबन 1/3 केस हैं जो कि 1 मिलियन के करीब हैं। ये हमें इधर नजर आ रहे हैं कि ये 3 मिलियन वर्ल्ड वाइड और 1 मिलियन के करीब यूएस के अंदर। न्यूयॉर्क में अभी भी काफी ज्यादा हैं, मतलब कि आई थिंक न्यूयॉर्क 288 300,000 के करीब है, और डेथ भी यूएस के अंदर 54,000 है, और ये डेथ बढ़ती जाएंगी। अभी ये सिर्फ कंट्रोल इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि सब अब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियस ले रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड भी अगर ये देखें तो उसी तरह ही है। वो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो मैं कंट्रीज फॉलो कर रहा हूँ वो एक जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और जर्मनी लॉकडाउन भी नहीं है, सिर्फ उनकी टेस्टिंग होने की वजह से उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और हमें देखना है कि वो कैसा करते हैं। और दूसरा स्वीडन, स्वीडन भी जो मुल्क है वो भी मतलब कि उनका लॉकडाउन नहीं है, कुछ बंद नहीं है, और वो भी एक डिफरेंट मॉडल को देख रहे हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि ये इनका क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद बाकी जो हम देख रहे थे, मतलब कि इंडिया में तकरीबन 27,000 है, मतलब कि वहाँ पॉपुलेशन मतलब कि बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहती हैं, तो एक मतलब कि काफी बड़ा इशू बन सकता है। आई थिंक इसको देखना जरूरी है। पाकिस्तान में 13,000 के करीब है, और बाकी सब इन बिटवीन। तो ये तो है हमारे नंबर ऑफ केसेस की अपडेट। सर आर यू I बैक? think she's still trying to figure out things. Okay. All right, ठीक है. So Sarah, whenever you figure out, just let me know on unmute your mic and jump in. और उसके बाद जो अगला हम सुन रहे हैं वो काफी न्यूज में आ रहा है स्ट्रोक के बारे में। मतलब कि ये जो स्ट्रोक फालिज होता है कि ये क्या अपडेट है, ज्यादातर यंग लोगों में आ रहा है, एज 30 और 40s में जो हैं। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, एक बहुत छोटी तादाद में ये लोगों को हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है काफी सीरियस है और समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब ये वायरस होता है और हमारी बॉडी उस वायरस से फाइट कर रही होती है, उस दौरान बॉडी की जो कुव्वत होती है ब्लड क्लॉट बनाने की वो एकदम बढ़ जाती है। फिर ये ब्लड क्लॉट जगह जगह जो बड़ी आर्टरीज होती हैं, नसें होती हैं, उनमें हो जाता है। और इन्हीं की वजह से हम देख रहे थे कि लंग में भी ये हो रहे थे, लंग में उसकी वजह से वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी। और अब जो कुछ केस सामने आ रहे हैं वो हो रहा है कि ब्रेन के अंदर भी ये क्लॉट बन रहे हैं, और ये जिस हिस्से में क्लॉट बनता है वो जिस्म का हिस्सा खराब हो जाता है। अभी हमें बहुत ज्यादा तो इस चीज की परेशानी नहीं है, लेकिन इसको ट्रेंड को हम वॉच जरूर कर रहे हैं कि ये क्यों एकदम केसेस ज्यादा नजर आना शुरू हो गए। मतलब जिसमें एकदम बंदे से बोलने की कुव्वत खत्म हो जाती है, या एक साइड जिस्म का नहीं चलेगा, बिल्कुल वही फालिज वाली चीजें। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो डैमेज परमानेंट हो सकता है। अभी इसका इलाज है, अगर ये टाइम पे आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो ज्यादातर या इसको क्लॉट बस्टर दवाई देते हैं, जिससे ये मतलब कि जो क्लॉट्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है, या फिर प्रोसीजर से एक पतली छोटी छोटी वायरिंग होती है जिससे ये जाते हैं और इन क्लॉट्स को निकाल लिया जाता है। तो ये है ब्लड क्लॉट्स का इशू। और अब जो अगली अपडेट है वो है कि दवाइयाँ जो हैं वो किस तक पहुंची हैं। एक दवाई जो हम काफी इस मीटिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो एंटी मलेरिया की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो है, और उसके साथ जिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, और उसके कह रहे थे कि बड़ा काम करेगी। अब कुछ रिसर्च निकली हैं जो एक्चुअली उनके अगेंस्ट हैं, मतलब कि वो शो कर रही हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। तो साइड इफेक्ट होने के वजह से अब उन दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और अस्पताल के अंदर ही सिर्फ दी जा रही हैं, बाहर आउट पेशेंट सेटिंग में नहीं दी जा रही। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। और जो एक और दवाई थी एंटीवायरल रेमडेसिविर, जिसके बारे में हम मतलब कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, उसकी रिसर्च भी आई थी, एक शिकागो से लीक हुई थी कि उसका कुछ बेनिफिट है, लेकिन रिसर्च बहुत अर्ली थी उसकी। कुछ चाइना से रिपोर्ट आई है, थर्ड टाइम अब आई है कि वो ड्रग फेल्ड हो गई है ट्रायल में और वो कामयाब नहीं है। लेकिन चाइना की ट्रायल पे अभी हमें इतना ट्रस्ट नहीं है जितना हम अपने यहाँ शिकागो की ट्रायल का वेट कर रहे हैं। तो ये मई के मिडल में ये इसके रिजल्ट आएंगे, तो लेट्स सी कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कितनी इफेक्टिव हैं। So, Sarah, are you on? If you can jump in now. I think moving along.
Hi, can you Okay, hear me? welcome. Thank you so much. All right. Hope Yes, everyone loud is and doing clear. well. Yeah. So I'll first talk about the topic of takeout food. I know I was concerned with that too because cooking every day becomes difficult, and especially now during Rosé, is it okay and safe to order food from outside from restaurants? So when I was doing my research, I found out it is safe. There's no rules against it. It's actually encouraged, to keep the economy going, and there's no risk of like contracting the virus through the food. However, the problem does come with, the exchange of the food. So either you're going to go pick it up from the restaurant, so you got to be careful, make sure you keep your distance from the person who's handing you the food. And a lot of restaurants have closed off at the door, and they'll be handing it to you at the door, or like you walk in a little and one person at a time. So that's a good way to keep safety precautions. Obviously, wear masks and gloves if possible, and sanitize your hands. And the other option is having delivery. So that's a lot of people are going towards that route. And when I was doing my research, so what are the best ways to keep safe during the during the situations with delivery? So what you can do is when a lot of restaurants and like Uber Eats, Grubhub, they're offering contactless delivery. So if you choose that option in the app, you can have the person deliver it at your door. They'll just knock on your door, and they'll leave, and you would have paid everything through the app, or you would have paid through your credit card, so you don't encounter the person. However, if you choose not to do that and you want to meet the person, and if you want to tip, one of the best things you can do is just tip through the credit card. You don't want to give cash, or you don't want exchange of cash in your hands, touching it. And when it comes to signing the receipt, a best option would be bring your own pen, sign the receipt, and hand it back. And when you bring the food into your house, make sure you wash your hands when you unpack. And then before eating, make sure you wash your hands again and dispose of the packaging. Other options you can do is when you go to pick up, as I said before, like make sure only one person goes and keeps the distance. And is it safe to order from small restaurants versus like, big chain restaurants? So a lot of the misconception was like, oh, don't go to local restaurants. You don't know if they're clean. But however, when I was doing research, a lot of the research was telling me that it's actually safer to order and pick up from smaller restaurants because they'll, number one, have less employees. So that's less people like encountering your food, or less people going in and out of the store. So that's actually preferred to order from like small restaurants instead of a big chain, which will have like, multiple workers in shifts, and you don't know how hygienic they will be. But a small local restaurants are usually just like family owned, so you'll know they'll be more safe and clean. Mansoor, do you want to add anything else about takeout? No, I think these are pretty good tips you gave. Okay, make sure एक ही चीज़ है कि when you get the container, dispose the outside container, take the food out, वो अपने container में रख दिया. If it's a food that can be microwaved, do microwave. But if the food that can't be microwaved, then it's okay. So, Yeah, so it's just being safe with the packaging and just handling. But once you like wash your hands and you're ready to eat, it should be safe. There's no like virus that's going to be in the food. It's not being transmitted. No research has proven that. So we're safe with that. And in regards to pets, the next topic, so a lot of people are actually going to foster and rescue centers to adopt cats and dogs because, the tension and anxiety and just sitting at home, you want like something for the kids to play with. And, if you're by yourself, you want another companion. So a lot of people are worried like, oh, are pets gonna, transmit the disease, or is it gonna spread through that? So when I was doing my research, a lot of like centers are actually like adoption centers are like running out of pets because everyone is coming to adopt, and that's actually a good thing. There's no science that proves that that the virus will be spread through animals. And I know recently in New York there was like 2 cats that were infected. However, when I was doing the research, one cat was infected because her owner was, and the cat had mild symptoms and she improved after a few days. And the other one was there was no sick contact
in the like the family members of that pet, but the pet was an indoor and outdoor cat, so she was going in and out, so you don't know where she could have gotten infected, and that cat also had mild symptoms and recovered. So there's no real evidence that proves that you can get sick from the cat or dog. So it is safe to adopt, and even if you have pets at home currently, you just got to keep precautions and safety. So the best things you can do is just if it's an indoor cat, like keep it indoor. Don't like take it out, don't let it go out. And if you have a dog, of course you have to let it go on walks, but don't go to dog parks. Don't let strangers touch the pets. Keep only like the family members allowed near the pets. And if someone is sick and has coronavirus in the family, keep them isolated from the pet as well, because if a person is touching or coughs on the pet, and then the pet goes and someone else touches the pet, you can still transmit, I guess, through that. It's not proven, but you never know. It's best to just keep precautions. And then, so if you're thinking of adopting, now's a good time. It will like decrease anxiety and have like something for the kids to do. And a lot of shelters and like adoption centers, they are keeping social distancing, so they know they only are requiring certain people to come in, and they'll like do the exchange outside in open areas. So don't worry about that. And if you want to look into like a vet, a lot of veterinarian offices are only allowing you to make appointments, and they'll take the pet inside and you will have to wait outside. So there is safety, and as long as everyone is safe and just keep social distancing, there's no reasons why you shouldn't have a pet or something like that. And sir, do you want to add anything? I think it's great. No, I think you did a great job, because pets do decrease the anxiety. It's been proven, especially when someone is lonely. Yeah. But it adds some added expense. So I think when you're adopting a pet, don't forget that this will be extra expense on your budget, knowingly if you're going through a tight budget. So you would have to work that part. Yes, of course. Yeah. So people just are not thinking long term sometimes. So if you are thinking of adopting the pet, it's not just food that you have to consider. Some have to get like medical care. There's long term like certain shampoos and grooming habits. So do think of the long term responsibility. It is like it is like a family member that you would have to be taking care of. And a lot of people don't know the economic hardships that they will be facing in the few months ahead. So just kind of think long term, like, is it financially feasible to get a pet right now? And then one more thing, Sarah. Someone had asked me, if let's say your kids are outside and walking when you go for exercise, and now you see someone's dog running to you, well, what would be the thing here to naturally do with this dog coming in? Because kids also run to the good dog and want to pet the dog, and dog wants to get pet as well. Yeah, so I mean, the best thing is, we still have to be observing social distancing, right? So I try to stop your kids from, tell them beforehand, like, just watch the pet from far away. Don't go up to the dog. But say, like, a dog does come close, you can quickly try to like sanitize your hand, but try not to get too, like into the fur, because you don't know what's on the fur, and you don't know. And I'm sure the pet owner himself will be trying to keep the dog away. A lot of people are doing that. I notice that, as if I go on walks or something, I'll notice, they do move to the side. But yeah, tell your kids beforehand, like, you can watch, you can see the dog, but do not touch. Okay, good idea. Now, does anyone else has any questions in the audience for Sarah? So Sarah, thank you so much. I think it's wonderful you did it on the last minute. I think your articles, they liked it as well, so we'll be looking forward for that. And then Right. next week we'll have you for to give us some discussion about loneliness and anxiety that you have worked on. Okay. All right. Thank you. Hope everyone is safe at home. Thank you so much. And then what else was on my mind? There was something else I forgot. I think it was about how to safely go to work, how to reopen. Oh, Mansoor, I actually don't know if I, topic. So let me see. Mansoor, quick thing. I don't know if I missed the part that Sarah Yes. talked about or not, but after things go back to normal, adopting a pet or getting a pet during this time is okay. But then when things go back to normal and you have to go to work, just remember that this is a responsibility that you have to take on. So I don't know if she mentioned that.
No, she didn't, but it's a good point Yeah. that you and then so basically next जो update है वो big one that I think everybody's concerned is कि unlock जो चीजें हो रही हैं उसको किस तरह किया जाए, क्या करना चाहिए, किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए, काम पे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये मल्टी फेज क्वेश्चन है सबके लिए, जिन्होंने काम पे जाना है, जिनके बिजनेसेस हैं और जो वैसे भी जिनकी फैमिलीज हैं। ये लाइट स्विच तो है नहीं जो एकदम ऑन हो जाएगा। और फिर एम्फेसिस उसी पे है कि जो ये केस नंबर स्लो डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस खत्म हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वायरस का रेट, जो इन्फेक्शन का रेट है वो स्लो किया जा रहा है। अब भी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ चीजें रूटीन में लानी होगी, क्योंकि मतलब कि जिंदा रहने के लिए काम और चीजें भी चाहिए, ज्यादा देर घर में नहीं रह सकते। लेकिन वो सब चीजें हो सकती हैं अगर जो उसको एक सिस्टम से और एक तरीके से किया जाए और समझा जाए कि वायरस की बिहेवियर क्या है। हमें इस चीज का क्लियर पता है कि वायरस एक दूसरे से लग रहा है और ज्यादातर ये ड्रॉपलेट से लगता है, हमारे हाथों से लगता है। तो ये चीजें प्रिकॉशन होनी चाहिए। अब एकदम हर चीज तो खुलेगी नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा अगर ये सब इस चीज का बराबर तरीके से अपने बिजनेस को ओरिएंट करते हैं और जिन्होंने काम पे जाना है वो प्रिकॉशंस लेते हैं, तो मेरा ख्याल ये चीजें अगले 2-3 महीने में ऐसा ऐसा मतलब कि खुल जाएंगी, लेकिन रिटर्न टू नॉर्मल नहीं होगी। मतलब हमें बहुत सारी चीजें जो इस वक्त हम नॉर्मल नहीं लगती, हमें वो नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मतलब कि जो सबसे पहले जो काम करने वाले की तादाद ज़्यादा है बिजनेस ओनर से, तो जिनको काम पे जाना होगा, जो स्टेट्स या उनके अपने टाउन्स उसको अलाउ करेंगे, तो मास्क तो बहुत ज़रूरी होगा। तो मेरा ख्याल है कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है मास्क पहनने से इस वक्त। तो आप अपने पास मास्क की सप्लाई रखें, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो सर्जिकल मास्क हों। और उसके साथ आपके पास हैंड सैनिटाइजर्स या डिसइंफेक्टेंट भी होना चाहिए। अगर ये अब कुछ सप्लाईज उनकी आना शुरू हो गई हैं, अगर ये अब भी नहीं मिल रहा, तो अपना घर में पानी और ब्लीच से बना के स्प्रे बॉटल्स में रखना होगा और अपने साथ गाड़ी में भी रखना होगा और जहाँ आपने काम पे जाना है वहाँ भी रखना होगा। और अगर जो आप काम पे जा रहे हैं, तो उसमें बड़ा क्लियरली आपको अपना मतलब कि सबको बताना होगा, अपना वर्क स्पेस देखना होगा कि मेरी जगह कितनी है। 6 फुट का फासला बन सकता है तो ज़्यादा अच्छा है, उससे नहीं बनता तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो रखना चाहिए। और अगर ये आप वहाँ किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो तब भी आपका 6 फुट का फासला होना चाहिए और कम से कम इंटरेक्शन हो। फ्रीक्वेंटली आपको अपने हाथ धोने हो, मतलब ये आदत बनानी चाहिए। और जो अगर जो आपका कोई वर्क एरिया है, तो उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। एग्जांपल जिस तरह हमारे जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो मेरा डेस्क ऑफिस है, तो मैं उसको सबसे पहले जाके साफ करता हूँ। जब वो साफ हो जाता है फिर मुझे पता है कि अब ये मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस भी सबको दिए हुए हैं कि अगर जो मुझे किसी ने ऑफिस में आना है तो वो मुझे फ़ोन कर ले। अगर जो फ़ोन पे बात हो जाती है तो ठीक है, और मास्क मेरे पास होता है। और अगर जो मैंने अपने ऑफिस से कहीं भी बाहर जाना है तो मास्क मैं पहनता हूँ। तो इसी तरह ये चीज़ें आपको भी करनी होगी। और अपने काम वालों के मैनेजर के साथ या जो भी स्टे इन टच के क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, ताकि आप वो भी उनकी पॉलिसीज़ फ़ॉलो करते रहें। और जो लोग कार से कर रहे हैं उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं वहाँ काफ़ी मसला होगा। अभी इस मतलब कि सोचा जा रहा है कि इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह लाए, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है लाना। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब कि बसों को, ट्रेनों को ज़रूर साफ़ कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा भी ये चीज़ें तो आपके क्लोज़ एनकाउंटर वहाँ होंगे, तो इसलिए आपको फिर अपने साथ मास्क कैरी रखना होगा, हैंड सैनिटाइज़र रखना होगा, बस में बैठते वक़्त, उतरते वक़्त ये आपको करना होगा। और अपने साथ चीज़ें ज़्यादा ना हो, मतलब जो आपके बैग्स होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो ना हो। जितना आप लाइट ट्रैवल कर सकते हो उतना अच्छा होगा। और अब जो के बिज़नेस ओनर्स हैं, जिनके बिज़नेसेस हैं, जो उन्होंने बिज़नेस वापस खोलने हैं, अगेन आपको अपनी अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलना होगा कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी मेरे ख्याल से कॉमन सेंस ज़रूर होनी चाहिए। हर बिज़नेस ओनर एक दफ़ा ये ज़रूर सोचे कि अगर जो वो रश करके अपना बिज़नेस खोल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो और उसके एम्प्लॉइज़ बीमार हो सकते हैं और बिज़नेस दोबारा बंद हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस बिज़नेस को खोलने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिन्हें पीपीई बोलते हैं वो इतने हैं अपने लिए भी और हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए भी, कि ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र्स
और प्लान है कि फ्रीक्वेंटली चीज़ों को साफ किया जाए। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ फिजिशियंस के बार्बर शॉप के लिए कुछ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं खोलने के लिए, और बार्बर भी खोलना चाह रहे हैं अपना बिजनेस। लेकिन एक उसको अगर जो बाल काटने हैं तो वो किस तरह सोशल डिस्टेंस में काट सकते हैं? क्या वो दूर से लंबी सी कैंची लेगा काटने के लिए, लंबी सी लेगा? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इनको साथ इकट्ठे काम करना होगा। तो इकट्ठे काम करना होगा तो उनको बहुत मतलब कि दोनों को मास्क पहनने की जरूरत पड़ेगी, कि जो कस्टमर है उसको भी और जो एम्प्लॉई है उसको भी, और फ्रीक्वेंटली हाथ भी वॉश करने होंगे, और सारा जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो भी वॉश करना होगा। तो क्या इसको कितनी जल्दी खोला जा सकता है? कस्टमर्स को कहाँ बैठना है? आई थिंक मेरे पास इसका तो जवाब नहीं है, लेकिन ये वो कुछ चीजें हैं जो कि हमें सोच समझ के करनी है। अगला जो दूसरा सवाल था कि जो 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 पूछा जा रहा था वो ये था कि उबर के लिए या जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये वापस कब जाएं, मतलब कि इनको भी काम करना है। कुछ अल्टरनेटिव काम तो हैं कि लेकिन फूड डिलीवरी का और शिपिंग का काफ़ी बिजनेस है मेरा ख्याल। उबर और ऐसी जो सर्विसेज है वो चल रही हैं, उनमें तो इतना मतलब खतरा नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकली किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ चीज़ों के साथ हो रहा है, और वो भी अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन टैक्सी बिजनेस भी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगा, और जो ही चीज़ें कंट्रोल में आती जाएंगी तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे। टैक्सी ड्राइवर को भी वही चीज़ें करनी होगी कि हैंड सैनिटाइजर्स होना चाहिए, लाइसो स्प्रे होना चाहिए, और मास्क होना चाहिए। मास्क पैसेंजर को भी पहनना चाहिए, मास्क ड्राइवर को भी पहनना चाहिए, और हर पैसेंजर के बाद सफाई भी करनी चाहिए। तो ये टैक्सी ड्राइवर का हो गया। इसी तरह जो Um, जॉब one more thing, Mansoor. So I think on TV or an article or something, they showed that a lot of people have put up like plastic shields, like Uber drivers as well. You know, like back in the day, I don't know if current taxis still have them, but that's what they've been doing as a precaution because some drivers are still driving even at the current times. So the ones that are, that's what they showed in the article, that they've gotten like a specific plastic or something just to kind of create a shield to put up between the passenger front seat and the back seat. अच्छा, दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में भी जो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं वो कमरों के आगे लगा के उनको इसी तरह आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन अगेन जो जहाँ चला रहा है आई थिंक वो अपने लोकल कम्युनिटी से ज़रूर गवर्नमेंट से टच रखे कि उनके क्या प्लान्स हैं, क्या चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल जो टैक्सी कंपनीज होगी वो भी कुछ गाइडेंस दे रही होगी। लेकिन कहने का मतलब है कुछ भी करो आपको एहतियात करके करना है चीज़ें, बगैर एहतियात के नहीं जाना। सबसे ज़रूरी मैसेज ये है। तो आई थिंक इसमें मतलब यूएस वाले रहनों के लिए आई थिंक जो ज़रूरी है ना वो जॉर्जिया स्टेट है, उसको देखना और उसको स्टडी करना ज़रूरी, क्योंकि वो पहली स्टेट है जो प्रीटी मच हर चीज़ खोल रही है। बाय मंडे तक उनके मतलब के बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। उसमें हमें देखना होगा कि केस सर्च कितने होते हैं, उसको 2 वीक लग जाएंगे। क्योंकि उन्होंने आई थिंक जिम भी खोले हैं, टैटू शॉप्स भी खोली हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो इतनी एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक किस्म का हमारा मतलब कि लाइव हो रही है ट्रायल इस चीज़ की कि वायरस कैसा बिहेव करता है, जबकि हम दूसरे मुल्कों में देख चुके हैं कि जो जिन्होंने दोबारा खोला उनमें केसेस बढ़ गए हैं। और मेरी बेसिकली यही कंसर्न थी। अगर जो कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको अब ले लेते हैं। आई थिंक मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे सेंड किए लोगों ने। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑफिस सेटिंग में काम कर रहा हूँ एंड कोई पर्सन है, मेरा को वर्कर है, वो कफ कर रहा है, राइट? तो हाउ आर वी सपोज टू रिएक्ट टू दैट, इवन दो अगर वो 6 फीट दूर बैठा हुआ है? डू यू थिंक आई शुड जस्ट गो आउट ऑफ द ऑफिस और जस्ट सिट देयर? थोड़ा सा एंग्जाइटी होगा आपको, ज़ाहिर है, समवन इज कफिंग। Smina, are you taking this? Sorry, no, I didn't hear that. Sorry, could you say that again? आई वाज सेइंग दैट अगर ऐसे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, राइट, और उसका को वर्कर है, ही इज कॉन्स्टेंटली कफिंग और ही कफ्स अ कपल ऑफ टाइम, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जस्ट सिट देयर और वॉक आउट ऑफ द ऑफिस, just or without being too awkward? So I mean, for most of the places, the policy I think for works are like, when I was going to clinic, you get screened. They ask you, are you coughing? You have a cold? You have a temperature? If you have any of those things, they're really not letting you back into work. So I think, if they're doing that, they really shouldn't be at work anyway, right? For the most part, that's the
what I've been told, and that's what at least in the hospitals we've been following to some degree. Yes, they have been having some workers work even if you tested positive, but if you're asymptomatic, those are the people that are working, right? So if somebody's coughing cold, you can raise a concern to the person who's more superior to you and just be like, I'm not comfortable being in the space working with them. And I think that's probably you can say it directly to them, but then it's more of a conflict of issue, or that a conflict that can arise with your coworker. And for the most part, usually it's suggested you can speak to a supervisor and say, I'm not feeling comfortable, or with everything going on. And I think with the current state, everybody is kind of aware of the situation, and most people who are coughing or have colds or anything are really not coming into work for this particular reason. But like we said, wear your mask, wear your protective gear. I know there are people that suffer from allergies that also have cough from allergies, and that was a concern because they're like, when we were going to work, coworkers were having an issue but we were having allergy issues, not COVID issues. It's a very fine line that you can't really distinguish between. And I know one coworker, he literally put up a shield between his coworkers just to give her comfort that, hey, like, it's my allergies. I know I'm not sick, but because we have to work, this is the scenario. And most workplaces are mandatory that 6 feet of distance, even at workplaces. They're not allowing you to work. Like, I know for us, when I was going to clinics, each physician was in their own room. They were not, we weren't even, we walked in from the hall, but like walked into the building and went into our room. You weren't even interacting with anybody else. And we weren't even allowed into our common space for that reason, because it was less than 6 feet of distance. But, I think that's the pretty much protocol. And then when you go back to work, you can ask your employer. That's like, what is the protocol if somebody does present with symptoms? What is the policy? I just want to know because I'm concerned. Okay, hope that answers the question. आई थिंक ये चीज तो यही है खिजर के, मतलब कि सबको आदत बनानी होगी हर वक्त मास्क पहनने की। इतना कंफर्टेबल नहीं है, मैं पहन रहा हूँ, मुश्किल होती है। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसको मतलब कि कुछ देर पहनोगे ना, तो जिस तरह आपने ग्लासेस पहनी हुई है और फेस यूज टू हो गया ना, फिर मास्क का भी यूज टू हो जाता है। ठीक है, अब मास्क की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर जो आपने घर का बनाया हुआ है और वो टाइट है, आपके कान को खींच रहा है, नाक पे ज्यादा दबा रहा है, या मुंह के साथ बहुत ज्यादा टाइट है, तो वो आपको तंग ज्यादा करेगा, तो फिर आपको चेंज करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जो आप ऑनलाइन किसी को मिल रहा है ऑप्शन सर्जिकल मास्क ऑर्डर करने का, चाहे वो 1 महीना लग रहा है, उसको 2 महीने भी लग रहे हैं, तो उसको ऑर्डर कर लें। मतलब कि जब तक उनकी वो आएंगे ना, उस वक्त ही ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अभी ऐसा चीजें खुल रही हैं अगले 2-3 महीने में, और जो सप्लाईज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, अवेलेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। तो जो एक्चुअल सर्जिकल मास्क, जो घर बनाए जा रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छा घर बना रहे हैं कपड़ों का, वो तो ठीक है। जिन लोगों की अच्छी फिटिंग नहीं है, उनको और ज्यादा मुश्किल आएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह आपका अगर जो ऑफिस है, टाइट स्पेस है, लोग ज्यादा हैं, तो एब्सोल्युटली जरूरी है। जिस तरह मेरा ऑफिस है कि एक सेपरेट कमरा है, तो फिर एक किस्म का मैं अपना आइसोलेशन खुद हो जाता हूँ, और मैं रोक सकता हूँ किसने अंदर आना है, किसने नहीं आना। And I think the best thing is to ask your employer before returning back to work, because a lot of places, I know that people that are still working, they have people working in shifts. Like one team, half the team will work one week, the other half of the team will work the next week because of the social distancing, like making sure people are staying 6 feet apart. So I think before returning to work, it's everybody has a right to inquire with their employer what what they're putting in place to kind of comply with the rules and regulations, especially if you're in the tri-state area. That is not laxing at all. That's not going to relax for a while because the numbers have been so high. But like places like Georgia, where everything is starting to open up, and then now they're saying Texas is heading in the same way, that they want to open up. So I think that you have every right as an employee to ask your employer what they're going to put in to place, because it is a safety issue. करेक्ट। हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ लीगल क्वेश्चन कि अगर आपको लगता है कि जो आपका डोर डैश ड्राइवर है या जिसने फूड डिलीवर की है, ही समहाउ वैंडलाइज द फूड, तो ऐसे में व्हाट शुड यू डू? शुड यू जस्ट कांटेक्ट योर लॉयर और समवन, और जस्ट कांटेक्ट डोर डैश या जो भी कंपनी है जब बंदा डिलीवर कर रहा है, इफ यू सस्पेक्ट दैट समवन हैज वैंडलाइज द फूड या फिर छींक मारी किसी ने? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट दे रियली मेंट, बट So Go can I ahead. actually answer this one? So actually, a few weeks ago, Amazon delivery guy
spit on one of the boxes, and they had a Ring camera and they visualized it, and the family recorded, and this guy was delivering packages throughout the whole neighborhood, and luckily this one family had it and they reported it. So the policy is you report it to the company, and then trust me, it will take off. You can report it to your local news and whatnot as well. And the best option is, and DoorDash will tell you, is to inform them and let them know what's going on, because they need to know if has this person been doing it throughout the people he's been delivering it to, or has it just been that one incident, or something like that. And they do a full-on investigation. And I know that Amazon guy was fired, and they were very vocal about it, and they apologized, and they spoke to the people who reported it and everybody else in the area as well, and it became a huge issue a few weeks ago. So I think that's pretty much the policy, is that you obviously speaking to your lawyer is fine, but that's not, you first need to contact the company and then inform them that this is what their employees doing. One is so they don't spread it out to everybody else, right? That's just human courtesy. And then otherwise, so they can take the necessary action as well. Right. And I think just to be safe, we shouldn't be ordering online food anyways. But if you have to, and you get a home delivery, I would suggest that you don't use the packaging it comes in. Just try to reheat the food and use your own food. Yeah, I mean, I've ordered delivery. I order Uber Eats, right? And so far, every time the delivery guy is gone before, I leave a message. I do cashless delivery, so everything is paid for, and I leave a message on the thing saying, please leave the food on the front porch. Once they just ring the bell, they leave. I pick up the stuff with my gloves and bring it in, and just right away throw out the packaging, take out the food, and like we said, if you heat up the food, most of the time it's pretty fine. It's just the packaging is the issue, right? So I think Right. जो vandalizing food है ना, I don't think कि बाहर लोग इतने बुरे हैं कि वो ये चीज कर रहे हैं. एक इंसिडेंट बुरा कि हर चीज बुरी है. It's pretty safe overall. मतलब चोर घर में वैसे भी होते हैं, तो चोरी करते हैं, लोग तोड़ते हैं, घरों में जाते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि सब चीजें खराब हो गई. तो इसी तरह अगर जो एक अमेज़न का था या एक दो और ने कर दिया गलत काम, तो डजंट मीन हर कोई कर रहा है. अगर ये कहीं सस्पिशियस है, तो उसको फूड को आप फेंक दो और कंपनी को फोन करके बता दो, एंड दैट्स आई थिंक मूव ऑन विद इट एंड डोंट गेट स्टक विद दिस होल थिंग. And I think one question is in the chat. Is there any development on the cases will decrease to almost zero during the summer? Are you seeing anything in the medical community? No, I don't think so. I think it's a big question सवाल है कि जो आगे गर्मी आएगी, सूरज ज्यादा होगा, क्या ये वायरस कम हो जाएगा? क्योंकि दूसरे कोल्ड वायरस, फ्लू वायरस कम हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में. उसकी वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा होती है, तो वायरस ज्यादा सरफेसेस पे देर रहता नहीं, उसकी लाइफ छोटी हो जाती है, तो वो मर जाता है. उसके साथ लोग ज्यादा बाहर आउटडोर में होते हैं, की खिड़कियां खुली होती हैं, तो जस्ट ओवरऑल चीजें बेहतर हो जाती हैं. क्या ये वायरस भी उसी तरह बिहेव करेगा? अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि कुछ मुल्कों में, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो वहाँ सर्दियां थी, वो गर्मियां थी और अब वहाँ सर्दियां आ रही हैं, तो वहाँ भी वायरस फैल रहा था. ये मतलब कि क्या होगा कि जहाँ धूप, जिस मुल्क में या जिस जगह पे धूप बहुत ज्यादा है, ज्यादा देर पड़ रही है, वो बाहर स्ट्रीट्स पे या बाहर वाली चीजों पे, तो वो मर जाएगा वायरस, तो ट्रांसमिशन रिस्क लो हो जाएगा. लेकिन अभी भी मेजॉरिटी लोग, इंडोर रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोर स्टोर्स हैं, मॉल्स अंदर हैं ज्यादातर, तो उसमें तो वो थ्राइव करेगा फिर भी. और फिर कई दफा क्या होता है कि समर की वजह से आप ट्रिप्स ज्यादा लेना शुरू कर लेते हो क्लोज इंडोर जैसी चीजों में, तो वहां फिर वो फैल सकता है. तो इट्स टू अर्ली टू से कि कितना वो इफेक्ट करेगा. मेरा ख्याल वो रेट को कम कर देगा, बट इट विल नॉट ब्रिंग इट डाउन टू वेरी लो और नन. I agree. And I think one more thing everybody would like to hear is जब आगे रमज़ान के बाद हमारी ईद आएगी, how would you celebrate that? Is there a way to do it by social distancing, or we should just avoid it, basically? I think I'll give this one to Sabina. Think you have that. No, I mean, I think even with Ramadan, we've been talking about it. It's unfortunate it's the time where we all get together, meet, and enjoy. It's the one major holiday for all of us. So, I mean, the whole point is, practice social distancing. And same thing with Eid. It's unfortunate. I mean, but think about it. Makkah is closed. Masjids are closed. If they're all following the rules and regulations of social distancing, then we as regular people should as well, right? I mean, and Eid is all about celebrating with your family. You should be in lockdown with your immediate family anyway.
for the most part, right? And yes, we want to meet with our aunts and uncles and everything. If anything, we can have a Zoom meeting, everybody. And that's what I was telling Mansoor. People have been doing it. People are celebrating prom via Zoom, right? So why can't we celebrate Eid via Zoom? Sit there, chit chat. It's it's all about being creative, right? And figuring out. It's unfortunate this is going on, but more Eids will come, and you want to be around for those Eids, and I think that's the best way I can answer it. And those of us who want to meet, yeah, it's your choice to meet with whoever, but I think everybody is safety first kind of conception, and we should just kind of follow that ideal. That's my opinion. Obviously, everybody has the right to their own opinion. And like Rihan Bhai just said, just stay safe and healthy, right? And that ultimately, that's what Ramzan is about, right? So it's, it came about from us, you know, uh, it's all about spending time with your family. You're home with them. And I think that's all we can really add to it. And मुझे तो लगता है ईद एवरी डे बनी हुई है सबकी, इतनी छुट्टियां चल रही हैं, व्हाट्स द डिफरेंस विद दैट ईद एंड नाउ? बच्चे भी घर, सब घर, pretty fun time if you look at it, bonding हो रही है, आप घर बैठे हुए हो, चीजें सीख रहे हो, होपफुली अपने अंदर पे और इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक ईद वो भी जस्ट अनदर डे, मतलब कि हर एवरी, मतलब कि जो भी मजहब है वो ये कहता है कि सेफ्टी फर्स्ट, मतलब कि अगर जो आप गैदरिंग कर रहे हो तो नॉट आप अपनी आपको जेपरडाइज कर रहे हो, बल्कि दूसरे को भी कर रहे हो। सो वेयर इज द लव, राइट? इफ Right. यू गो पीपल, तो आपने अनदर नेगेटिव इफेक्ट लिया। तो आई थिंक ओवरऑल वी शुड जस्ट कैरी ऑन द डे एज यूजुअल, और उसको सेलिब्रेट घर करें एंड जस्ट इंक्रीज द बॉन्ड। I really think if everybody wants, we should just do a family azan or namaz, and everybody just read in their house, but be on Zoom together, right? It's an option if तो फिर ये ठीक है, फिर मेरा ख्याल सब अपनी अपनी ईद की छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं कि क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, किस तरह चीज करते हैं। फैसिनेटिंग देखने के कि लोग कितना क्रिएटिव होते हैं। और मैं एक यही चीज देख रहा था कि इस कोरोना वायरस के की वजह से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, मतलब कि एक जो इंसानी दिमाग है वो कितना कुछ सोच लेता है अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कि मैं अभी एक वीडियो क्लिप पे देख रहा था कि एक औरत स्ट्रीट पे चल रही थी, उसके पास फेस मास्क नहीं था और स्क्रीन नहीं थी, तो उसने ये जो डोनट खाने का प्लास्टिक का क्लियर बॉक्स होता है, उसने आधा काट के उसको अपने मुंह पे बांधा हुआ था। तो मतलब कि ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो कि बंदा आम रूटीन में हम सोच नहीं रहे थे। तो आई थिंक यहाँ भी देखते हैं कि क्या-क्या लोग किस तरह शेयर करते हैं। Yeah, I think we'll keep evolving as we go forward, and hopefully, we'll come up with something. I think we don't have any questions right now, so I think you can just summarize and call it a day. चलो ठीक है। तो सही है फिर, बेसिकली इन समरी मतलब टेक आउट फूड को अगर ये एहतियात से हैंडल किया जाता है तो इट्स सेफ। इवन छोटे रेस्टोरेंट, छोटी ग्रोसरी स्टोर से अगर आप चीज़ें लग रही हैं तो आई थिंक इट्स स्टिल सेफ, जस्ट द वे सैर सेड दैट कि वो जो छोटे हैं वहाँ लोगों के इंटरेक्शंस कम हैं, तो रिलेटिवली लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और इसी तरह अगर ये आपको पेट अडॉप्ट करना है, लेना है कंपेनियन, तो उसको लॉन्ग टर्म में ज़रूर सोचें, उसका कॉस्ट, उसको रखना। ये ना हो कि 2 महीने के लिए रखे और बाद में उसको स्ट्रीट पे छोड़ दें। इसी तरह अगर जो स्ट्रीट का आपको पेट कोई मिलता है तो उसको अवॉइड करें पेट करने से। और मेडिकेशंस अभी कोई निकली नहीं, विल कंटिन्यू टू वॉच, ठीक है? और समर आने से हमारा नहीं ख्याल कि वो वायरस को कंप्लीटली ख़त्म करेगा, थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क पड़ जाएगा। और जो यंग लोगों में स्ट्रोक्स हो रहा है, लेकिन वो बहुत छोटी तादाद है, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत परेशानी वाली चीज़ है इस वक़्त, लेकिन हम उसको कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। और अगर जो किसी को सिम्पटम्स होते हैं स्ट्रोक लाइक, तो आई थिंक इमरजेंसी में जाना, क्योंकि इस वक़्त बहुत लोग वेट करते हैं, उनको खौफ है अस्पताल जाने से, क्योंकि पहले हम लोग कहते हैं कि अस्पताल मत आना। अब हम कह रहे हैं कि अगर जो आप बहुत बीमार तो ज़्यादा देर मत रुको, कि बहुत बीमार होने के बाद मत आना, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो कॉल करना ज़रूरी है इस वक़्त। और जूं-जूं आगे हर टाउन, हर शहर खुलेगा आहिस्ता-आहिस्ता, तो उस के हिसाब से अपने प्रिकॉशंस मस्ट लेना, लेकिन उसको ये मत समझना कि फ्री टिकट हो गई या हर चीज़ ठीक हो गई, बैक बैक टू नॉर्मल मेरे आएँगे। तो या अगले वीक की मीटिंग पे हम एक टॉपिक रखते हैं Victor, I just wanted to add एंग्जायटी one का। thing.
one thing was that everybody should, every state or town or whatnot, they have hotline numbers, and so just make sure you know the hotline number to call and where to go for testing. Because I know where I'm working, we are giving all our patients the hospital hotline number and the local hospital. So like we're giving our main hospital's number, and then we're also giving the hospital that's near them that is doing specific testing. So not every hospital is doing pediatric testing. So if you know, for your children, they would have to go to a specific hospital to get the testing done. But you should have these numbers. You don't want to be stuck in a situation where you get sick and then you're trying to figure out, where am I supposed to call? What am I supposed to do? So just like we had told everybody, you know, make sure you have a quarantine plan, and you know, if somebody does get sick, how are you going to quarantine them? It's the same thing with having the hotline numbers. So make sure you have all the numbers. The other thing is the same thing. If in your family, you know, if somebody gets sick, or if a child gets sick and one of the parents has to go, make sure, you know, the other parent can manage at home without the other adult, because they're not going to let you in, let you back home, right? Because if you go with your child, and actually some places, if the child is older, they're not even letting the parents stay. It's a very difficult situation with kids. So in that sense, but you know, just kind of have all these plans prepared, have somebody as a backup if you need help, support, you know, especially if you have elderly parents and, you know, they won't be able to get groceries or this and that. So have something, you know, in mind. Everybody should have that prepared. And I think we've been saying that from the beginning, but it's just kind of to reiterate now that things are going to be opening. You know, we have a fear that there's going to be a back rise, and, you know, just want to have everybody cautious about that. आई थिंक बड़ा फैक्चुअल है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी अस्पताल में यही है कि हम विजिटर्स को आने नहीं दे रहे। तो एक दफ़ा कोई अस्पताल में आता है, दाखिल होता है, तो फिर कोई विजिटर नहीं आता। सिर्फ मैंने अभी 1-2 के लिए एक्सेप्शन की है, वो भी इस बेसिस पे कि वो मतलब टर्मिनल कंडीशन थी, उन्होंने 1-2 दिनों में मर जाना था, तो एक्सेप्शन एक फैमिली मेंबर को एक टाइम पे 1 दिन में आने दिया, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ। तो ये, और मेरी कुछ न्यूयॉर्क में जो मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं, एल्मर्स में हैं, एस्टोरिया हॉस्पिटल में हैं, कुछ न्यू जर्सी में हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो भी बेसिकली यही बता रहे थे कि कंडीशंस अभी भी बड़ी बुरी हैं। एक जो न्यू जर्सी में काम कर रही है, वो बता रही है कि 19 फ्लोर्स हैं, सारी की सारी कोविड पेशेंट से बिजी हैं। इसी तरह जो दूसरे अस्पताल में हैं, वो भी यही बता रहे हैं। मेरा एक अच्छा मतलब टीचर दोस्त भी है, उससे मेरी बात हुई है, तो 2 वीक पहले उसको भी कोरोना वायरस हो गया, उसको होने से उसकी पूरी मतलब कि वाइफ को भी हो गया। तो इट्स अ सीरियस कंसर्न, मतलब इन चीज़ों को हमें अभी भी उसी तरह ही सीरियस रखना है। ऑल्दो न्यूज़ में हमें चीज़ें सुनने में आ गए हैं कि वायरस का रेट कम है, चीज़ें मतलब कि बेहतर हो रही हैं, बट ऐसा केस है, लेकिन फ्री टिकट नहीं है। और एक क्वेश्चन है, एंड आई थिंक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि मतलब कि कुछ आर्टिकल थी कि अगर जो आपने फेस मास्क, कोई भी फेस मास्क पहना हुआ है, तो जो नायलॉन की स्टॉकिंग्स होती हैं, अगर जो उसको काट के उसको रैप कर लें, तो एक्चुअली प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि नायलॉन की जो स्टॉकिंग है वो आपको कुछ वाटर रेजिस्टेंट भी दे रही है और कुछ और भी फिल्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि वो काफी क्लोजली निट होती है। तो आई थिंक दिस इज अ राइट थिंग, वो कर देती है, बट आई डोंट नो इफ यू रियली नीड दैट समथिंग टू दैट डिग्री, क्योंकि आप ऐसे मतलब लेवल पे आ नहीं रहे। हम हॉस्पिटल में तो बहुत क्लोज होते हैं पेशेंट के, मुंह के अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, so it's very different than let's say working in an office setup or walking around। तो इसी तरह कुछ जो मतलब कि होते नायलन टाइप के कपड़े भी जो हैं, अगर आप उसका भी मास्क बना लेते हैं तो वो भी काम दे जाता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर जो आपके पास डबल लेयर कॉटन का मास्क है तो वो ठीक चलता है, और अगर जो आपको सर्जिकल मास्क मिल जाते हैं जो इस वक्त आप ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएंगे, तो आई थिंक इट्स रिलेटिवली। तो मैं कुछ वो बोल रहा था कि ये अगर जो अगले वीक इस वीक हमने वो मीटिंग रखनी थी, लेकिन बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो हम उसको अगले पे कर लेते हैं। हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ऊपर ज़रूर बात करनी है, क्योंकि मैं अब कम्युनिटी में और जो दूसरा सबसे बात हो रही है कि इसके जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ वीक पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली अब नज़र आने लग गए हैं कि हाँ, लोगों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को एक्चुअली रोका जा सकता है प्रॉपर तरीके से। तो इस चीज़ के बारे में फिर हम अगले वीक और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, वो हमारा बेसिकली टॉपिक बन जाएगा। तो आई थिंक एवरीबॉडी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, गुड कमेंट्स देने का। वी लेट द क्वेश्चंस कम, जितने भी सवाल हैं आप उनको भेजते जाएं, तो हम अगले वीक में आंसर कर देंगे। अगेन सबीना, सारा, थैंक यू सो मच। नीदा, खिजर, थैंक यू फॉर
really coordinating this whole beautiful thing, and we're enjoying it. I think I'm loving it. The fact कि हम इतने लोगों को message दे रहे हैं and कि मतलब कि life में difference ला रहे हैं. Yeah, and I think I would suggest everybody to just forward the links and just spread the message basically, so we can have more people as more as possible every time. See you. See you next See week. you. You're welcome. Thanks, guys. Stay safe.